स्वागत আছে মই আপনি হালাइन के खजानियो सोलो अपनी हनित्या सासे HornbillTV Nagamese एक्सप्रेस नागालैंड लगा सबसे डांगर फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल पुंचीवले 6 दिन बचिगिना थका निशना स्टेट गवर्नमेंट तैयारी कुरिया दिखी पायासे चुमुकी दिमादे यूनिटी गेट भालब्रा सजाई दिगेना थका दिखी आसे और रास्ता खान भी रिपेयरिंग कुरी आसे HornbillTV इटु ओपर ग्राउंड रिपोर्ट कुरिसे आहिबी डिटेल सावो HornbillTV इतिया एरे चुमुकेदिमा डिस्ट्रिक्ट यूनिटी गेट उसोरे आहिगिना आसे इतु यूनिटी गेट तो बना दो इमान दिरी हुआ नै आरो नागालैंड लगा चीफ मिनिस्टर प्रा इतु यूनिटी गेट इनॉग्रेट कुरा टाइम दे क्वादो इतु गेट तो दिखिगिना मानु नागा मानु लगा यूनिटी नागा मानु के जानिबो लाग्या गेट एकता हो लागे कोइगिने जनाई दिया निशना हॉर्नबिल फेस्टिवल करने 6 डेज ही बचिगिने आसे काउंटडाउन शुरू हो जाए और हॉर्नबिल फेस्टिवल लगा सिल्वर जुबली थग्या निशना इतु बार फेस्टिवल तो और बिशी डांगोर होबले लगा जनाई दिया से तो आज यारे মই खान आहिगिने खरा कुरा निशना नागालैंड लगा गवर्नमेंट ब्रा सब जगह रे इतु हॉर्नबिल फेस्टिवल ते स्ट्रेस कुई थगा निशना इतिया ब्यूटिफिकेशन जादो मेनली कोहिमा और डिमापुर दे हुली भी एक बार ब्रा सुंदर बनाई गने बाहर ब्रा आया दूसरा स्टेट्स दूसरा कंट्री ब्रा आया मनु खान करने ताई खान के भाल ब्रा वेलकम कुरी बोले और नागा मनु इनेगा आसे नागा मनु सपा आसे नागा मनु यूनिक आसे वर्सटाइल आसे कोई गने देखा बोले लगा कोशिश कुरी थगा निशना अखा रखे से पब्लिक खान भी इतु दे होली भी कोऑपरेट भी कुरिबो कोई गने तो मैं खान यारे नागालैंड प्रिल्यूड टू हॉर्नबिल फेस्टिवल कोई गने जुआ काली एकता वन डे इवेंट थागिसे कोदे एकता कल्चरल गेम्स खान होली भी खिलिया इतु एकला होली भी इनेगा परफॉर्मेंस अलग अलग भी थगा निशना मैं खान हॉर्नबिल फेस्टिवल दे इतु लगा सेलिब्रेशन इतु परफॉर्मेंस खान भी आरु भी दिखि पावो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो नागालैंड लगा बिगेस्ट फेस्टिवल आसे इतु किले बिगेस्ट फेस्टिवल आसे कोइले तो मैं खान सब ट्राइब निजोर लगा फेस्टिवल थाके होली भी इतु तो बिगेस्ट फेस्टिवल तो किले आसे कोइले सब ट्राइब सेलिब्रेट करे हॉर्नबिल फेस्टिवल दे ताइहे लोथा होली भी आंगामी रेंगमा पुचुरी होली भी सब ट्राइब आही गने ताइ खान लगा कल्चर लगा यूनिकनेस तो हॉर्नबिल फेस्टिवल दे ही देखाय और ताते बाहर प्रा आहिया खान होली भी आही गने moi खान लगा आइडेंटिटी moi खान लगा कल्चर साइ गने जाय गने दूसरा कंट्रीज खान दे भी कोले जाय होली भी ताइ खान हॉर्नबिल फेस्टिवल दे ना जा आगे रे moi खान रास्ता दे की ताइ खान के देखाई गने जाबो इतु ही ताइ खान भी साइ गने जाय कोआ निशना First impression is the last impression. इतु करने याते ताइ खान के वेलकम कुरा ला जगह होली भी ब्यूटीफाई कुरी बोले भी बेसी इम्पोर्टेंट थगा निशना इतिया ये महिला पीछे ने यूनिटी गेट होली भी भाव प्रा सजाई दिया लगा भी दिखी पासे एवरग्रीन पॉट खान होली भी इनेगा सेटअप कुरी गने थगा और जगह भी लेतरा नाराखी बोले लगा भी एकता ताइ खान नोटिस भी उलाई गने जे মই खान यारे यूनिटी गेट तो पहिला भी इनॉग्रेट करा मानु दिखि दियो होले यूनिटी गेट लगा डिजाइन तो वेरी एथनिकली दान लगा एकता डिजाइन पाथर खान ब्राही एकता पुटअप करा पाथर खान भी पेंट ना दिगिना नेचुरल पाथर ओल्डन डेज ते किना राखी ने जे यारे वुड कार्विंग्स खान होली भी बेसी बाल ब्राता खान बनाई गने जे इतो गने पब्लिक खान भी और कुन हेरि आही गने इनेगा सा खान होली भी ना हॉर्नबिल फेस्टिवल खान दे जाय गने की साइले भी ना की एन्जॉय करिले भी निजोर लगा जगह निजोर लगा स्टेट के लेतरा ना करिले ভাল আছে और মই खान इतिया भी सभी येरे छथे ब्रिज होली भी ভাল ब्रा ब्लैक टॉपिंग भी करि दिसे पॉलिश भी करि दिया निशना स्टेट गवर्नमेंट होली भी आखा रखे से इनेगा एकता स्टेट के सपा रखिया लगा इनिशिएटिव सोशल वर्क लगा इनिशिएटिव खान भी ऑल थ्रू आउट टाइम दे कुरी गिने जावले लगा भी आखा रखे से HornbillTV हॉर्नबिल फेस्टिवल दे होली भी जाय गिने अपने हंगे लाइव कवरेजेस खान भी आनी थागिवो इनॉग्रेशन दे होली भी और ताइ खान लगा इतु दिन डेज खान भी किनेगा सेलिब्रेशन खान भी जाय इतु खान भी अपने हंगे लाइव कवरेजेस खान भी आनी थागिवो रिपोर्टर के केसे न्यू के हुआ कैमरा पर्सन जॉय वॉच HornbillTV चुमुकिदिमा जाखमा कोहिमा दे November 21 दिन कम्युनिटी सीट बैंक प्रोडक्शन यूनिट एकता इनॉग्रेट हुइसे कुदे स्पेशल गेस्ट तो के क्रेडिटो ह्युमे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर कोहिमा डिस्ट्रिक्ट आही पाइसे
Even de Bosti laga council chairman had GB Women Society chairperson aro community seed bank farmers khan attend Croatia. Kekrelito Hyome pra tai laga keynote address de itu seed production and food processing unit inaugurate kuriado community laga beacon of hope, resilience aro growth ase Croatia. Aha generations khan garne Hyome aro at Croatia ki itu inauguration do passionate manukhan laga countless homoy laga hard work aro dedication laga result ase Croatia. Itu seed bank de kali seeds khan store no hoigina hopes aro dreams khan bi store huwa kushi kundu ekta symbol de khara hole common purpose garne ahigina itu achieve kuriado. Hyome pra and de sob manukhan ge tai khan laga efforts garne deepest gratitude extend dishe. Itia chutu ekta break luo site akiwe HornbillTV. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। At office, I may be the boss. But being a woman, I have to make my home the best place to live in. Mama! Hey! Every day, my priority is to give the best to my family. Hey, welcome home. Wow, that's great. Everyday spices makes my task easier. Everyday spices never let you down. Manipur and November 16 din MLAs khan laga go ransack kurigina properties khan loot kuriade aro choita manu arrest huishe. Kude 1 June do juvenile ase police pra November 22 din choita manu arrest kuriya khan do Harrison Singh 28 saal thegishe, Wahangbam Samson Singh 32, Yankom Chandrasekhar Singh 57, Mutum Rojan Singh 28, Laishram Bijoy Mete 21, aro Jameson Tokchom 20 khana se kude 1 June do underage thegishe. November 16 laga rati de mob khando Chief Minister N Biren Singh laga ancestral ghor kuntu Luang Sangba Imphal East te ase itu B attack kuribole thakishe hoile bi CRPF personnel aru police pra rukhai dishe. Itu attack piche de Chief Minister N Biren Singh kuishe elected representative khan laga ghor attack kriya khan opor action luo koigina.
Police control room statement hisab de November 16 ghatna de arson or properties khan damage kuria de involved thakya khan arrest kuria do itia tak 41 manu arrest huise koigina janaise. Center pra Arobi Bishi Central Armed Police Forces Manipur deploy kurishe Security Advisor Kuldeep Singh pra janaishe ki sob milaigina 288 companies deploy kurole ase. Manipur de matter opor comment kurigina senior journalist aro author Pradeep Kumar Panju Bampra kushe ki itu move luado center pra effort huo pare kundu state te situation do thanda kurole nimide. Panbu Jam pra kushe ki conflict pra khali ekta side ekla disarm nakruwo hoilibi both side prabi equally treat kruwole lagi. You being someone who is associated with law enforcing agencies, sir, there is a report by the Ministry of Home Affairs that additional 70 more company of Central Paramilitary Forces will be sent to Manipur. Sir, do you feel that in the present condition there is a requirement for more central forces in Manipur, sir? It depends on how the forces are being used. It is not so much the number or the quantity, but the qualitative use of the forces that's coming in. We are not very sure as to the purpose of the additional deployment. Where are they going to be deployed? Is there a strategic plan how to use these additional forces? That is very, very unclear in our mind. Where are these forces going to be deployed? As we speak, I see them scattered all over the town. The trucks and the vehicles moving left and right. But we do not see a very coherent, consistent strategy as to how this violence is going to be contained. And I hope the state government will make use of this additional force where the forces can be optimally utilized and targeted at containing the violence as we see it. So lastly, any comments on the reimposition of AFASPA in 6 more police stations? Again, AFASPA is a mechanism. And again, it will depend on the intent and the will and the political will for the imposition of the AFSPA. There was AFSA in several police districts before this imposition, and yet the violence continues. If there is a proper laid out policy and program as to how violence will be contained, this could have been done even without AFSPA. So the imposition of AFSPA does not, to me, make any meaning at this point in time. We'll have to wait and see how these mechanisms as well as additional forces are used to contain the violence as we see. Retired policeman Brojen Tangjam pra kushi ki itu do troops khan ge kinaga use kruo itu opor ase. Numbers kiman ase itu nohoi gina hoilibi troops khan ge kinaga use kure itu ekta important issue ase. Tai kushi ki troops khan itia san jaga de ase aro suggest kurishe ki state te violence content kurule strategy na punje. Really required much amount of security. What is your assessment of the situation? No, my assessment is no, not required. We are already, before the sending of this, before 50, the 220 had come, and after that now 15. Before these companies came, the state is already oversaturated with the security forces. And it is a question of how to utilize them, how to deploy them, how to use them. It is with the central government. It should be done. With that, there is sufficient force which can take care of the situation. I don't know why these things again and again. Maybe that recently the houses of the ruling parties, MLAs, ministers have been attacked. Maybe to provide protection to that it may be. But otherwise, I don't see the requirement. As I said, I would like to quote that when mobile entry to Manipur was stopped, it was only the Manipur police which stopped and the manning about 4 or 5 entry points, about 5 entry points. And at the time, no security force, outside force was required. So if Manipur police could do it, we don't want to. It is meager force. I don't see why already saturated, oversaturated. I will say not saturated, oversaturated force cannot take care of the situation. It is, as I said, it's a question of intelligently and tactically utilizing with in a proactive manner with advanced
anticipation, etc. We are talking about this state government has said that they did not have the intelligence. Now this is almost, I don't want to comment on that. Manipur is such a small state. You know where the cookies are there, where the Maitis are there. So it is just only a matter of a little bit of common sense, a little bit of exercise of your brain. I mean, with that, whatever intelligence required cannot be easily be drawn up, and the proactive and anticipatory action can be taken. Now there is a report by the Home Affairs saying that additional 70 more companies, which amount to altogether to 88 companies of Central Paramilitary Forces, will be sent to Manipur. Do you feel at this hour, there is a need for more additional forces in Manipur? It's difficult to guess what the center has in plan, but from the appearance, it does seem there is a plan for clamp down on the trouble here. And if that is to happen, it'll happen on both sides. You can't disarm one side. In a conflict, you can't disarm only one side. You'll have to disarm both sides. And that probably that's what is being planned. But we still have to wait and see how it unfolds. Because so many times we guessed different things, but it never unfolded the way we wanted. For instance, the arrival of troops have been happening for a long time, and we thought there was going to be some action. But these, as we have seen, were merely placed in the buffer zones and with no action. I'm not saying that the buffer zones are not necessary. The buffer zones are necessary. The end to immediate violence is necessary. But alongside that, there has to be a parallel kind of movement to solve the problem. You know, on one side, you're dealing with the symptoms. The symptoms are the violence outbreak, but you have to also look at the actual disease for there to be a lasting solution. Treating basically the symptoms only, which is why the problem has not gone. You have to deal at the root causes of these problems also, because the root causes are not gone, and those have to be settled. And I have spoken about this so many times that in international conflict studies, there is something called a frozen conflict. You just think that there is a solution, there is peace by the absence of violence. And this we have witnessed in Israel, for instance. Palestinians and the Israelis, they fight. And then when the fighting ends, we think problem is solved. Peace has returned. But because of conflict, the root causes of the conflict has not been settled. It keeps flaring up again and again. The problem is we have had this kind of approach to problem solving for a long time. For instance, in the Nagamese violence, there was never any solution. It just ended because people are tired. And it can flare up again, as we are witnessing again now, the demand for rollback of districts. Those are the sparks which can again flare up that old problem. And this Meitei and Kuki conflict can also end that way, which is not desirable. I mean, it should end, but as it ends, we also have to be looking for the long-term kind of solution where the way you identify the actual disease which has caused this present flare-up and treat those diseases as well. Itu taishe Manipur de military deploy krala ita luo to take a break. Manipur the situation do bia hua gane doctors, lawyers, senior journalists, engineers aro alak educated professionals khan ekilogo de ahigina Imphal de protest rakhishe Saturday din. Educated professionals aro research scholars khan kuishe ki Taikan state laga prolonged crisis pra frustrated huishe kuigina kundu kane silent protest rakhiole fesla kuishe. Retired police officer Brojan Tangjam kuishe itu protest pra state laga academic community laga white section दिखाई कोई गिना और इटू अचानक प्रोटेस्ट तो जिरीबाम दे इनोसेंट माइकी और बच्चा खान टारगेट हुआ गने आसी कुशे ब्रोजन कुशे इटू प्रोटेस्ट प्रा ताइकान अथॉरिटीज के अपील क्रिया से और ताइकान कुशे कि स्टेट ते लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशंस खान दो रीअसर्ट करू बोले
Protest part lua research scholar Devina Moirangtem kuishe Mikey aro bacha khan ge target kureado inhuman ek ase aro tai kuishe ki ina ekhan aro itu ghatna khan do condemn kuribole lage kuishe. So sir, your name please sir. My name is Brojan Thangchum. I'm a retired police officer and a United Nations official. Sir, please continue. And part of the Tarak session that is coordinating today's sit-in protest. Sir, what is this silent protest being organized by Tarak Saisu today? This protest was organized by Tarak Seshu, coordinated by Tarak Seshu, but it represents a wide section of the professional and academic community of the state. One thing we have realized is that, of course, the immediate reason for the protest is the incident in Jiriba, where innocent women and children were very brutally killed during the incident, during the crisis. But we also wanted to reclaim the shrinking moral and ethical space in the wake of this crisis. One development that we have seen with concern is that the shrinking moral and ethical space is also the disappearance of the legitimate institutions of the state. Through this protest, we want to appeal to those who matter, to those who are in authority, to reassert the legitimate authority of the state and contain the violence sooner than later. So your name? Ite gane iman hai ala khobor gane sai thakiwi Hornbill TV.